Hi guys, welcome back to my channel. And in this class, we're gonna do the second part, and hopefully we'll finish this chapter, primary activities, by today itself. So primary activities. तो हमने इसके बारे में पढ़ा, what hunting and gathering के बारे में पढ़ा, nomading herding पढ़ा, commercial livestock herding, and we also seen the places, the countries where commercial cattle farming is concentrated. We have done some questions also. Now we will do agriculture, subsistence agriculture, plantation agriculture, and Mediterranean agriculture. So agriculture is practiced under a variety of physical and socio-economic circumstances resulting in several types of agriculture systems. Different types of crops and livestock are cultivated and reared based on agriculture practices. The primary agriculture systems are as follows. System practiced here a variety of physical, social, or economic circumstances, resulting in several types of agricultural systems. So different types of crops जो हैं livestock हैं, they're cultivated and reared किया जाता है based on agricultural practices. The primary agricultural system are as follows. Farmers consume almost all the products in the style of agriculture since the farm is tiny. Primitive agriculture, subsistence agriculture and intense subsistence agriculture are two types. तो primitive और intensive subsistence agriculture है. Primitive क्या है? जैसे ये पहले तो मिल्पा जो नेम इन डिफरेंट रीजन्स जैसे मिल्पा है, झूमिंग लाडांग है ना? और ये कहाँ होता है कॉमन? अफ्रीका में. तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अनदर नेम. मतलब जो स्लैश एंड बर्न की पहले तो कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग अ पीस, पहले क्लियर करते हैं कल्टीवेशन के लिए, एंड क्या करते हैं फिर व्हेन द सॉइल लूज फॉर फ्रेश, फिर ग्राउंड इज क्लियर फॉर एग्रीकल्चर. तो जब सॉइल लूज कर देता है फर्टिलिटी आफ्टर 2 to 3 to 5 years, फिर ग्राउंड इज क्लियर्ड, फिर ग्राउंड क्लियर, फ्रेश ग्राउंड क्लियर हो जाता है फॉर एग्रीकल्चर फिर सॉइल लूज करते थे, फिर फ्रेश कर. तो ये एक साइकिल बन गया है cultivation. Intensive, this sort of agriculture is common in monsoon Asia, highly populated areas. Wet paddy cultivation crops other than paddy are dominant in this form of farming. The production per unit area is great, but land holdings are limited due to high population density, reduced use of equipment, family labor, and the usage of farmyard wheat, soybean, barley, and sorghum are some of the other crops cultivated in northern China, Manchuria, North Korea, and Japan. It is practiced across Indo-Gangetic plains as well as drier portions of Western and Southern America. तो क्या होता है जो लैंड जो वेट पैडी क्रॉप है ये मतलब मॉनसून एरियाज में मतलब मॉनसून एशिया के हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में होता है एंड दिस इज मोस्टली वेदर सीजन मॉनसून में होता है. So wet paddy are dominant other than paddy na. Wet paddy cultivation other crops other than paddy is dominant. The production per unit area is great, great है but land holdings limited है क्योंकि high population density, मतलब reduced use of equipment, family labor. These are the factors because limitations. So wheat, soybean, and sorghum crops are cultivated. Wheat है, soybean, barley, right, and sorghum. Plantation agriculture. So Europeans ने introduced किया such as coca, coffee to West Africa, tea to India and Sri Lanka, rubber to Malaysia. Sugarcane and banana to the West Indies by the British, and the coconut sugarcane to the Philippines by the Spanish, and so on. तो यूरोपियंस ने जैसे क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया सच एज कोका, कॉफी हो गया, वेस्ट अफ्रीका, है ना, वेस्ट अफ्रीका में, टी कहाँ इंडिया एंड श्रीलंका में, रबर कहाँ मलेशिया में, शुगर केन बनाना कहाँ वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश ने किया, एंड कोकोनट शुगर केन किसने किया फिलीपींस में by the Spanish. So extensive commercial grain cultivation. This is done on these interiors of semi-arid and mid-latitude regions such as the Eurasian steppes, Canadian and American prairies, Argentina pampas, and South Africa's velds, Australia's downs, and New Zealand's Canterbury plains.
तो गाइस नेक्स्ट क्लास में ना जब ज्योग्राफी करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं अभी पक्का एक ना मैप के साथ मैं लगा के पढ़ूंगा, सो दैट वो इजी रहेगा, इसमें मैंने मैप नहीं लगाया है। तो यूरोप यूरेशियन स्टेपनीज हैं, कैनेडियन एंड अमेरिकन पे प्रेरीज हैं, दीज आर द एरियाज। अर्जेंटीना के पम्पा, साउथ अफ्रीका's वेल्स एंड ऑस्ट्रेलिया's डाउन, द न्यूजीलैंड्स कैंटरबरी प्लेन्स। मिक्स्ड फार्मिंग, नॉर्थ eastern Europe, eastern Northern America, sections of Eurasia, and temperate latitudes of southern continents all practice this. Crop agriculture and animal husbandry are also practiced here. Wheat, barley, oats, rye, maize, fodder, and root crops, as well as the production of farm animals such as cattle, sheep, pigs, and chickens, are all used to supplement income. So mixed farming हो रहा है. So नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, sections of Eurasia, and temperate latitudes of southern continents. So ये practice होता है. Crop agriculture भी practice होता है. Animal husbandry is also practiced. Wheat, barley, fodder, and root crops, as well as the production of farm animals such as cattle, sheep, the production of farm animals भी हो रहा है. So cattle, sheep, pigs and chickens are all used to supplement income. तो इससे income बहुत मतलब supplement मिल जाता है income के लिए. Crop rotation and intercropping भी use होती हैं, as well as a significant capital investment in agriculture supplies. Dairy farming, it is practiced in North Western Europe, Canada, Southeastern Australia, New Zealand, and uh, Tasmania, near urban and industrial hubs. Feeding, milking machines, and animal binding storage facilities, veterinary service, and add up quickly. तो dairy farming भी हो रहा है. No dairy. It is also time due to the for meticulous animal care. Unlike crop farming, there is no off season during this. Sorry. तो नो ऑफ सीजन नहीं है, हाँ, ये कभी भी कर सकते हैं, बट क्योंकि क्रॉप फार्मिंग में वी हैव टू नो कि इस पीरियड में कौन से पीरियड में कब डालना है क्रॉप, ये तो कभी भी कर सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग है. क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, आप मतलब ये क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. डेयरी फार्मिंग आप एक्सप्लेन करो, mixed farming, extensive commercial grain cultivation and plantation agriculture. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन योर फॉर योर प्री बोर्ड्स, राइट. सो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, दो टॉपिक्स रह गए हमारे, माइनिंग एंड मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. हम फटाफट इनको पढ़ लेते हैं. तो इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेडिटेरियन, in North Africa from Tunisia and South Atlantic coast and southern California, certain areas of Chile, southwestern South Africa, and southwestern Australia. It is highly specialized for commercial agribusiness के लिए, and a major citrus fruit provider. Citrus fruit provide कर सकते हैं. So इसमें कुछ terms हम पढ़ेंगे. Viticulture, तो ये कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विटिकल्चर मतलब कल्टीवेशन करते हैं ग्रेप्स पे मेडिटेरियन रीजन. So inferior grapes are made to into raisins and currants, which while superior grapes are processed into wines. तो कुछ grapes के लिए क्यों raisins बनाते हैं किशमिश जैसे, and currants, while superior वाले wine के लिए होते हैं. तो figs and olives are also cultivated. Olives भी cultivate होते हैं, figs भी cultivate होते हैं. Market gardening and horticulture. And high value products. So you're farming high value products such as vegetables, fruits, and flowers that are grown specially for the urban markets. Urban markets में ये grow मतलब ना grown करते हैं for urban markets. तो urban में शहर में जो markets में बेचने के लिए. Small merchant finds farm as the norm farm. It needs both capital and लेबर. इसको कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है. ट्रक फार्मिंग, this many relates to the growing of vegetable specialty. Truck farming gets its name from the fact that the distance between the farms and metropolitan markets may be spanned overnight. तो overnight मतलब ट्रक से overnight जो travel करती है ना, because distance between metropolitan markets है farms, तो वो ज्यादा दूरी में है, तो overnight by trucks it may be spanned. Factory farming, raising of primarily chickens and cattle. This is capital intensive process. A capital intensive process है, and एक ये ongoing maintenance.
सुपरविजन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग भी होती है ना, चिकन्स को ब्रीड करते हैं. इट इज यूज थ्रू आउट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रियल रीजन. So इंडस्ट्रियल रीजन में बहुत जरूरी होता है. Cooperative farming, farmers create a cooperative organization under this agriculture system by combining their resources willingly for more efficient and lucrative farming. Farm goods are bought and sold with the assistance of societies. Individual farms are unaffected. Denmark and the Netherlands, Belgium, Sweden, and Italy are among countries that practice it. Collected farming, it is based on group labor. Group labor में based है and social ownership of the means of production. Farmers share the resources here with the exception of tiny portion that they are permitted to keep for themselves. Prod- Produce is sold to the government at predetermined rates. Predetermined rates से वे sell करते हैं. Members are compensated based on the type of the work they perform. It was initially practiced in khilkos, which is in the form of सोवियत यूनियन. तो कलेक्टिव फार्मिंग भी है. ग्रुप ग्रुप लेवल पे बेस्ड है ना. तो फार्मर्स अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं इसमें विद द एक्सेप्शन ऑफ टाइनी पोर्शन दैट द परमिटेड टू कीप फॉर, मतलब उनके लिए कुछ ऐसे थोड़ी छोटी सी चीज उनको परमिशन नहीं है कि वो रख सकते हैं. सो प्रोसीजर प्री डिटरमाइंड रेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको. सो पहले कहाँ इनिशियली प्रैक्टिस हुआ, खेल कोर्स विच इज इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन. Have mining. It is the process of extracting mineral resources from the Earth's surface. The Industrial Revolution was the catalyst for its growth. Factors that influence mining activity. The industry is influenced by two elements. These are the following: the size, grade, and method of it are all physical characteristics. Demand for materials, technology, money to create ये economic. तो physical क्या है, उसका size क्या है, grade क्या है, method of occurrence है ना, ये फिजिकल है मतलब बाहर से उसका साइज देखे, ग्रेड देखे फिजिकली. इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक के लिए टेक्नोलॉजी देखते हैं, मनी देखते हैं, डिमांड देखते हैं कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. Surface and underground mining are two forms of mining. Open cast mining occurs near the surface, making is the simplest and most cost-effective method. The other is underground mining, which uses vertical shafts to harvest minerals from very deep mines. It necessitates the use of lifts, drills, and high-tech equipment. तो surface and underground two forms of mining. तो methods हैं ये. ओपन कास्ट में क्या होता है, नियर द सर्फेस. ओपन कास्ट माइनिंग अकर्स नियर द सर्फेस. ओपन कास्ट माइनिंग तभी होती है उसकी सरफेस के पास, मेकिंग इट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपलेस्ट भी है. द अदर इज अंडरग्राउंड. वर्टिकल शाफ्ट्स नहीं होती इसमें टू हार्वेस्ट मिनरल्स को हार्वेस्ट करने के लिए बहुत डीप माइंस पर खोदना पड़ता है. दिस इज द यूज ऑफ लिफ्ट्स, ड्रिल्स एंड हाई टेक, मतलब इसमें बहुत इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, लिफ्ट्स चाहिए होते हैं, ड्रिल्स चाहिए होते हैं. तो दिस इज अंडरग्राउंड. क्वेश्चंस करते हैं. व्हाट इज माइनिंग, what are the two methods of mining, ये आप लिख लीजिए. ये आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स. What do you understand by underground method of mining? Underground method, underground नहीं, आप ये इधर लिखिए, सॉरी नॉट अंडरग्राउंड, राइट. सॉरी अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड, सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस. अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट एंड ओपन कास्ट ऑल्सो. तो ये दोनों अलग अलग मतलब सेम है, सेम इन द सेंस, बस अलग अलग मेथड है ये, तो अलग है. एक्सप्लेन ट्रक फार्मिंग, एक्सप्लेन ट्रक फार्मिंग आपको करना है, 3 मार्क्स का आ जाएगा ये. अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये आपके टोटल मिला के तो 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स. ये और ये 2 कर देते, ये दोनों 2 मार्क्स के ईच नहीं, सॉरी दोनों मिला के तो 3+2 5, तो ये आप 5 मार्क्स में कर देते हैं. तो गाइस अभी के लिए इतना ही करते हैं, एंड in the next class we're going to do the next chapter. We're going to learn the next chapter, geography, दूसरे book से. I hope you guys liked it. Please subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.